to create a data center in the cloud or you want to deploy an application in the cloud. अगर आप क्लाउड में कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं, so the first thing is that you need to go and create an infrastructure. And the creating that infrastructure needs some steps or design principles which you always have to keep in mind. यानी सबसे पहले आपको क्या काम करना है, that you need to know, then what you will be doing, or maybe what is going to be the last thing. So you have to keep all these things in mind. So first I'm starting with risks and compliance, क्योंकि जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं shared responsibility model, or you can say that they are using hybrid cloud environment. And when they are using hybrid cloud environment, so in that particular case it is important कि आप ये जाने कि क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाउड में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिस्क एंड कंप्लायंस। So first is shared responsibility model. Moving IT infrastructure to AWS services creates a model of shared responsibility between the customer and AWS. The shared model can help relieve customers' operational burden as AWS operates, manages, and control the components from the host operating system and virtualization layer down to the physical security of the facility in which the service operates. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लाउड में कोई भी सर्वर बनाते हैं तो हाइपरवाइजर फर्स्ट इज योर हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर लेयर तक की जो सिक्योरिटी है वो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Customers assumes responsibility and management of the guest operating system, including updates and security patches, other associated application softwares, as well as the configuration of the AWS provided security group firewall. तो जो भी सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हैं, जो भी डेटा आप डाल रहे हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप्स आप डिफाइन कर रहे हैं, that all is the responsibility of the customer only. Customer is responsible for all these things. Now, risks. AWS management has developed a strategic business plan, which includes risk identification and the implementation to evaluate the strategic business plan at least biannually. तो Amazon मैनेजमेंट क्या करता है, वो अपने एरिया में रिस्क एनालिसिस करते रहते हैं और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो स्कैन करते हैं एटलीस्ट बायएनुअली, साल में 2 बार. उससे क्या होता है, उनके जो एरिया में जो उनको रिस्क्स लगते हैं, DDoS अटैक्स या किसी भी और टाइप के अटैक्स या एनीथिंग, उसको फिक्स कर सकते हैं. So this process requires management to identify risks within its area of responsibility and implement appropriate measures designed to address those risks, right? So AWS security regularly scans all internet-facing service endpoint IP addresses for vulnerabilities. AWS security notifies the appropriate parties to remediate any identified security risk. तो जो Amazon security है वो इंटरनेट फेसिंग सभी एंड पॉइंट्स को स्कैन करती रहती है और वो AWS नोटिफाई करते रहते हैं अलग अलग पार्टीज को टू रेमिडिएट एनी आइडेंटिफाइड सिक्योरिटी रिस्क. तो ये हुआ आपका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. तो आपको सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ये समझना है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन में ये था कि Amazon रिस्पॉन्सिबल है हाइपरवाइजर और उसके नीचे वाली लेयर के लिए, जबकि उसके ऊपर जो भी आप डालेंगे आप रिस्पॉन्सिबल हैं. तो Amazon अपने एरिया में काम करता है हर चीज़ को फिक्स करने के लिए. जैसे लास्ट ईयर 2 साल पहले इंडिया में जब दिवाली थी तो Amazon के मुंबई डेटा सेंटर में DDoS अटैक हो गया था. So that was Amazon's responsibility. So Amazon fixed it within few hours, and that was due to some application where a lot of vulnerabilities were there,
ऑल्दो कस्टमर की वजह से वो चैलेंज था, बट अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे हिट हुआ था और बहुत सारे कस्टमर्स भी हिट हुए थे, राइट। तो उस केस में डीआर जो जिन्होंने बनाया था, they were actually able to recover it. Now, next we are talking about is क्लाउड वॉच हुआ नहीं है ना शायद हमारा? क्लाउड वॉच हमने कर लिया। नहीं, क्लाउड वॉच नहीं हुआ। अच्छा, चलो बता देता हूँ। Now, so next we are talking about is architecting for AWS best practices. तो जब भी आप क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको पहले, सबसे पहले हो सकता है कस्टमर को बेनिफिट्स बताने पड़े to move towards the cloud. So first is almost zero upfront infrastructure investment. Almost zero upfront infrastructure investment. यानी आपको इनिशियली कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है क्लाउड में. Second is just in time infrastructure. Second is just in time infrastructure, right? Third is most efficient resource utilization. Most efficient resource utilization क्लाउड में आप कर सकते हैं. यूसेज बेस्ड कॉस्टिंग, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपकी कॉस्ट आएगी. रिड्यूस टाइम टू मार्केट. जितनी भी एप्लीकेशन आप अगर ऑन प्रेमाइस में डिप्लॉय करेंगे तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा टू गो टू द मार्केट. वेयरएज इस केस में आपका जो, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द क्लाउड इज अवेलेबल ऑन डिमांड, तो यहाँ पे जो आपका मार्केट जाने में, जो लॉन्च करने में, एप्लीकेशन लॉन्च करने का जो टाइम है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज टेक्निकल बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड. So the first is automation, the complete infrastructure which you are having. It is a scriptable infrastructure. The complete infrastructure you are having, it is a scriptable infrastructure. That means you can implement automation in the account. You can implement auto scaling, which is the best feature. That means जब भी लोड की जरूरत पड़ेगी तभी वो लॉन्च होंगे तभी आपको पैसा देना है. प्रोएक्टिव स्केलिंग, क्योंकि इलास्टिसिटी क्लाउड में अवेलेबल है तो आप प्रोएक्टिव स्केलिंग कर सकते हैं. यू आर प्रेडिक्टिंग कि कल लोड इंक्रीज होगा तो आज आप उस लोड को बढ़ा सकते हैं. फोर्थ इज मोस्ट एफिशिएंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट. जब जिस चीज की जरूरत है आप उसको ले सकते हैं, जब जिस चीज की जरूरत नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं, और जिसका भी कॉस्ट है वो उसी बेसिस पे लगता है, इस बेसिस पे आप उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नोन एज इम्प्रूव्ड टेस्टेबिलिटी. इम्प्रूव्ड testability. Improved testability means you can actually test your applications at a larger scale. If I'll give you an example, मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि एटलीस्ट 10,000 यूजर्स उसको यूज करेंगे और 10,000 यूजर्स उसको यूज करेंगे, बट मैं कितने यूजर्स पे उसको टेस्ट कर सकता हूँ. मान लीजिए मैंने 5 सर्वर्स, 10 सर्वर्स, 20 सर्वर्स लिए, बट मैक्सिमम मान लीजिए मैं 500 यूजर्स पे उसको चेक कर पाया, राइट. बट when it will launch into the market, maybe the load will increase more than the predictions. So at least in this cloud, what you can do is you can launch it. You can actually launch it at a very, very high configuration. यानी आप बहुत ज़्यादा testability can improve because we are paying on the hourly basis, right? Last is disaster recovery and business continuity. Now, a disaster recovery and business continuity is there. So we are saying that disaster recovery and business continuity is by default available in the cloud. Disaster recovery और business continuity जो है वो by default cloud में available है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Amazon आपको ऑलरेडी हर चीज के लिए फेल ओवर देता है, but still if your application is very, very critical and if you think that you have to create a DR, so you should have to create a DR. So जब भी आप क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको you have to be a pessimist. Pessimist means you always have to think that infrastructure can fail anytime. Infrastructure can fail anytime. So you have to design
deploy based on the concept that infrastructure can fail anytime, तो आपको हमेशा बैकअप बनाना ही बनाना होगा. Next is the overflow the traffic to the cloud. That means if traffic will increase, Amazon can handle it because they are having auto scaling. This is elasticity in the cloud, how we can handle elasticity in the cloud. How elasticity can handle the load. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि let's suppose my company is launching an application and this dotted line, the black line which you can see, this is my load prediction. So I'm predicting that load is going to increase like this. We are predicting कि जो load है वो कुछ इस तरह से increase होगा. But load हमेशा according to the prediction increase नहीं होता है. तो जो red line है that is the actual demand. Red line is the actual demand. तो जब red line यहाँ पे है तो red line क्या करेगी? Red line will actually so you can see जब red line नीचे जा रही है इस predicted demand से, तो यानी आप resources जो उस level पे हैं dotted line के level पर उनका use नहीं कर रहे हैं, यानी you are wasting the resources. और जब ये dotted line के ऊपर चला जा रहा है, तो उस केस में you will not be able to handle the load because your infrastructure is maintained at the dotted line level. That means whatever your prediction was. So इस केस में you will not be able to handle all the new requests, new customers which are coming to an application. So in this particular case, what we can do is we can actually go with auto scaling. इसके अलावा जितनी भी scaling policies हैं, they will not work. So design for failure. So as a solution architect, आपको हमेशा failure के लिए design करना ही करना है. So be a pessimist when designing architectures in the cloud. Assume things will fail. Always design, implement, deploy for automated recovery from failure, like Netflix is doing. Now, decouple your components. The key is to build components that do not have tight dependencies. The key is to build components that do not have tight dependencies. तो आप देखते हैं हमारे पास पहले monolithic architectures थे. Monolithic architectures में हर application जो application की उसकी dependency बाकी सारे components पे थी. But अभी हम microservices architecture की बात करते हैं, जहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि application की dependency किसी भी और component पे ना हो, और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं. देखिए. So in case of web application architecture, you can isolate app server from the web server and from the database. The app server does not know about your web server and vice versa. These 5 deep couplings between these layers, and there are no dependencies code-wise or any other functional perspective. So आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो infrastructure use करना है जहाँ पे application dependency ना हो. Decouple your components. In case of batch processing architecture, you can create asynchronous components that are independent from each other. Right? Now, so implementation of elasticity, जो हमने diagram देखा था उससे related है, तो यहाँ पे आप कुछ scaling policies लगा सकते हैं. Proactive cycle scaling, that means periodic scaling बोल सकते हैं इसको, कि आप weekly, monthly, quarterly इसको increase या decrease कर सकते हैं. Proactive event based scaling just when you are expecting a big surge of traffic, request you to scheduled business events. आपको मालूम है कि कल load increase होने वाला है, तो आप इसके लिए proactive event based scaling भी ले सकते हैं. And the last is known as auto scaling, which is based on the demand. How you are going to secure your application in the cloud? So you know that by default security is implemented on all the components in the cloud as security group. Second is going to be ACL, which is known as access control list, and the third is going to be
योर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो आपकी एप्लीकेशन की जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है वो की जा सकती है वेब से। तो जितने भी टाइप के अटैक्स होते हैं इंटरनेट पे किसी भी एप्लीकेशन पे like your DDoS attacks, SQL injection attacks, pattern language attacks. There are so many types of attacks. All those can be handled in the cloud using WAF, Web Application Firewall. It is a very, very advanced firewall. And next we are talking about is architecting for AWS best practices. तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स। तो पहले समझते हैं वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है वेबसाइट होस्टिंग या एप्लीकेशन होस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है मुझे आइडिया हो कैसे बनाना है, बट मान लीजिए मैं ऑलरेडी क्लाउड में काम कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी वेब आर्किटेक्टर वेबसाइट होस्टिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। तभी मेरी कंपनी के पास डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट आ गया एंड दैट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू machine learning workload. I need to create architecture which will be able to process a lot of data. So this is a completely different type of architecture. So I, as a solution architect, will not come to know that what all services needs to be taken. और मुझे मान लीजिए थोड़ा बहुत आइडिया, मुझे S3 लेनी है, Kinesis लेनी है और बहुत ज्यादा डेटा है तो मुझे EMR लेना है, बट किस फैशन में, किस ऑर्डर में उनको कनेक्ट करना है, कहाँ के बाद कहाँ डेटा जाएगा, वो सब हो सकता है मुझे आइडिया ना हो उतना ज्यादा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो एंड चेक well architected frameworks. You can go and check well architected frameworks. यार आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही? ओके, लेट मी। अब आ रही है सही? अब सही आ रही है? बस हाँ सर, सही आ रही है। सही आ रही है। ठीक है। तो वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर योर आर्किटेक्चर। मान लीजिए आपने आर्किटेक्चर बना लिया, पहला तो केस हो गया कि आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि भाई किस टाइप का आर्किटेक्चर बनाना है। सेकंड ये हो गया आपने आर्किटेक्चर बना लिया, बट हो सकता है आप कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स को मिस कर रहे हैं, या हो सकता है देयर आर फ्लॉज इन द आर्किटेक्चर, और मे बी यू हैव नॉट इंक्लूडेड सम सर्विसेज। So what you can do is you can compare your architecture against the best practices, right? तो आइए देखते हैं। So what are well architected frameworks? It is the strategy and best practices for architecting in the cloud. It is the strategy and best practices for architecting in the cloud. Allows you to measure your architecture against the best practices. How to address any shortcoming. Purpose of well-architected framework is to making informed decisions about architecting in the cloud, understanding the potential impact of those decisions. You should have to think actively about what if in case of failure scenarios. You should have to think actively about what if in case of failure scenarios. It totally depends upon the business context. AWS value proposition, it helps customers. It is a consistent approach to reviewing architectures, understand and reduce risk in your architecture. And the third is learn best practices. So it is the consistent approach where you will keep on reviewing our architectures, understand and reduce risk in your architecture, learn best practices. आपको हमेशा best practices जो हैं उनको ही follow करना है, and you will be able to influence future architectures. That means you always should have to keep on implementing something new. The well architected frameworks क्या करेंगे, they will increase awareness of architectural best practices. जब जाके सीधा देख सकते हैं कि भाई क्या क्या best practices हैं. Addresses foundational areas that are often neglected. Foundational areas तो आपको clearly guidelines नहीं है. It is a consistent approach to evaluating architectures. आपने ऑलरेडी आर्किटेक्चर बना लिया है और मान लीजिए डिजाइन करने वाले हैं, POC करना है, उससे पहले आप अपने आर्किटेक्चर को evaluate कर सकते हैं. So it is composed of three things. First is known as pillars. Second is known as design principles.
and the third is known as QAs, question answers. Now, pillars of well-architected frameworks. First is security. Second is reliability. Third is performance efficiency. Fourth is cost optimization. And fifth is operational excellence. So first is security. So whenever you are designing an architecture, the first thing you need to take care of is that you have to implement security in the cloud. That means you have to take care of the security. All the security measures need to be taken care of. Second is reliability. Reliability means high availability. आपको कोई भी infrastructure without high availability नहीं बनाना है. हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप एक केस में high availability बना लें और एक केस में हो सकता है where your application is very very critical, तो आपको highest level of high availability and reliability की जरूरत पड़े. तो वो आप इसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है क्योंकि वो application की क्रिटिकलिटी पे डिपेंड करता है. थर्ड इज परफॉर्मेंस एफिशिएंसी. तो जब आपके पास सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी इन प्लेस होगा तब आपको परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो है वो देखनी होगी, यानी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आपको मिलने लगेगी. When your project will start getting performance. So in the initial phase, no one will talk about cost cutting. No one will talk about anything else because initially you need to deploy the project. Once you will deploy it, once you will start getting performance, security and high availability is in place, then you will talk about cost optimization. So cost optimization is again a very, very important pillar of solution architecting. And you cannot become a good solution architect till the time the performance of the project is very, very good, but at the same time, the cost is very high, right? Cost आपकी बहुत ज़्यादा, performance भी अच्छी है तो लेकिन आप अच्छे solution architect नहीं है क्योंकि आपको उस केस में cost optimization करनी है. Cost हमेशा जो project की guidelines होती हैं उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. And once you will handle cost also, you will get operational excellence. Right? Journal design principles. So journal design principles are stop guessing about your capacity needs. You should have to stop guessing about your capacity needs. Test systems at production scale. You have to test your systems at production scale. Third is automate to make architectural experimentations easier. So सबसे पहली चीज जब हम ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर्स में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते थे तो पहली चीज ये होती थी कि हम गेस करते थे कैपेसिटी नीड्स, यानी हम ये पता लगाते थे कि कितने सर्वर्स की जरूरत है, कितने डेटाबेसेस की जरूरत है. दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी वर डूइंग, राइट. बट जैसे ही हमने क्लाउड में मूव किया, क्योंकि क्लाउड में हर चीज ऑन डिमांड अवेलेबल होती है, तो डिजाइन प्रिंसिपल चेंज हो गया. दैट स्टॉप कैपेसिटी नीड्स. just think about implementation because whatever you need that is available on demand. Second is test systems at production scale. Test systems at production scale. That means you can test these systems at the production scale because everything is available on demand. Third is automate to make architectural experimentations easier. तो आज का टाइम जो है यहाँ पे आपको हर रोज नए फीचर्स, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो every second day the client will keep on coming up with a new idea and you cannot say that we cannot implement it or we will not look into it. So you always have to keep on developing new features, and once you will develop new features you have to implement them also. So as soon as you will be coming up with a change, so there are chances that your infrastructure can fail or maybe some of its components can fail. So इस केस में आपको करना क्या है, आपको automate करना है अपने infrastructure को for recovery so that architectural experimentations will be easier on it. Although हम पहले से ही जो हमारा SSM है, Systems Manager,
वहाँ पे जब भी हम पैचिंग करते हैं या बग फिक्स करते हैं या एनहेंसमेंट ऐड करते हैं किसी भी एप्लीकेशन सर्वर में, हम उसको एक सर्वर पे टेस्ट करके चलते हैं। फिर हम उसमें एक पैरामीटर सेटअप करते हैं कि भाई पहले हम सभी इंस्टेंसेस जो चल रहे हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में उन सबके ऊपर एक साथ नहीं करेंगे। हम चूज करते हैं सिर्फ 10% के ऊपर पहले ये बग फिक्स होगा या एनहेंसमेंट होगा। 10% में भी हम एरर रेट लेके चलते हैं। अगर 10% में से भी अगर 10% पे, यानी अगर मान लीजिए 1000 चल रहा है, 1000 का 10% हो गया तो 100 इंस्टेंसेस, और 100 इंस्टेंसेस का भी 10% हो गया 10 इंस्टेंसेस। अगर मैं उसको करता हूँ तो अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है 10% में भी, तो वहीं पे उसको स्टॉप कर देगा। So all these things we are already doing, but still you have to make your architectural experimentations easier. You have to automate. Allow for evolutionary architectures. That means you should always have to keep on coming up with something new. In Amazon, so many services are there. जैसे हमने अभी पढ़ा था एक सर्विस which is your storage gateway, right? स्टोरेज गेटवे क्या करता है, सीमलेसली ऑन प्रेमाइसेस से क्लाउड में डेटा माइग्रेट करता रहता है। बट उसके इक्विवेलेंट एक और नई सर्विस आ गई व्हिच इज डेटा सिंक। अब डेटा सिंक क्या करती है, डेटा सिंक भी काम सेम करती है, बट दैट इज अ फास्टर सर्विस देन दिस, राइट? सो अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हटा के आपको वो लगाना है, यू कैन डू इट। And the last is build data-driven architecture. So you should always have to keep on collecting the data related to your infrastructure, so that if tomorrow you need to analyze it, that what are all the problems which you faced in this particular project, so that you will be able to take a brilliant initial action on the next infrastructure which you will implement. You should always have to keep on collecting the data related to your infrastructure. तो जर्नल डिजाइन प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं और आपको पिलर्स भी याद रखने हैं। तो AWS प्रोफेशनल जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इन पिलर्स के बारे में बात करते हैं। पिलर्स है तो आपको ये पिलर्स, जैसे अभी तो हमने सिर्फ बता दिया सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, तो इनके अंदर भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन आप इंटरनेट पे जाके मैं बताता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स आपको कहाँ मिलेंगे। सो इसी तरह से हर क्लाउड ये ऑफर करता है वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स। देखिए एज़्योर में भी आ गया वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क्स। सो यहाँ पे आप वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क गाइडेंस देख सकते हैं। वेल आर्किटेक्टेड टूल्स अमेज़न ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। So you can see Reliance Steel and Aluminium uses AWS well architected frameworks to build better in the cloud. तो देखिए Reliance तो अपना cloud और पता नहीं क्या क्या बनाने की उसमें है, लेकिन still they are using Amazon. So every company, if you will see, they are using cloud in one or the other way. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AWS well architected 5 pillars. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सिक्योरिटी पिलर, रिलायबिलिटी पिलर, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्या HTML डॉक्यूमेंट्स या किंडल या डाउनलोड करके आप इनको पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए ये सारे लेंसेज हैं, यानी अलग अलग टाइप के, अलग अलग, मान लीजिए मुझे एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या हो सकता है मुझे इससे जो नेक्स्ट था वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड था। सो हाँ पता ना, let's go back and see. सो Amazon के भी वेल आर्किटेक्टेड टूल्स हैं। वेल आर्किटेक्टेड टूल्स क्या करते हैं, वेल आर्किटेक्टेड टूल में आप जाएंगे तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो क्या काम करेगा, कितने कंपोनेंट्स आपको हैं, कितने यूजर्स के लिए आप उसको यूज करेंगे, कौन सी कंट्री यूज करना चाहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस Amazon will give you recommendations. तो ये वेल आर्किटेक्टेड टूल्स हैं। इसी तरह से थर्ड पार्टी वेल आर्किटेक्टेड टूल्स भी अवेलेबल हैं, राइट?
guidance and purpose. Just want to show you a document. यहाँ पे लेंस तो यहाँ पे है ही, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मशीन लर्निंग लेंस का सिनारियोस देखते हैं। सिनारियोस दिए हुए हैं। तो मान लीजिए मुझे एक बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनानी है विच इज यूजिंग एआई सर्विसेज। तो आप देखेंगे ये सब तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो ही गया। फिर आप रेफरेंस आर्किटेक्चर देख सकते हैं। तो रेफरेंस आर्किटेक्चर में इसने आपको क्लियरली बताया है कि इस केस में आप S3 के अंदर डेटा अपलोड करेंगे, लैम्बडा से उसको ट्रिगर कराएंगे। और यहाँ पे Amazon recognition is a service which gets image, facial details and attributes, right? So it is actually a kind of tool by sitting on top of the data which will tell you what this is all about. तो ये एक रेफरेंस आर्किटेक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर डेमोग्राफिक एनालिसिस सोल्यूशन। और इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ML से रिलेटेड बिल्ड ए कस्टम मॉड्यूल, रेफरेंस आर्किटेक्चर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है किस तरह से ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ETL दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्योंकि EMR से रिलेटेड है, इसका रेफरेंस आर्किटेक्चर आप देख लीजिए। बिग डेटा है तो EMR यूज करना होगा, राइट। सो इस तरह से आपको बहुत सारे रेफरेंस आर्किटेक्चर्स मिल जाएंगे, आप रेफरेंस ले सकते हैं, देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर ओन आर्किटेक्चर, राइट। इसके साथ में हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। आपको मान लीजिए आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट निकालनी है। तो मान लीजिए एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट आपके पास एक जॉब आती है एंड मान लीजिए दैट जॉब इज रिलेटेड टू कि आपको मान लीजिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मान लीजिए बनाना है। तो in this particular case what we can do is we need to find out the cost of the project। ऐसा ना हो कि हम गलत कोट कर दें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। So they're going with AWS S3 calculator। So that is a simple monthly calculator जहाँ पे आप हर कंपोनेंट की जो प्राइसिंग है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। So we went to EC2। Let's suppose मुझे एक EC2 इंस्टेंस की कॉस्ट निकालनी है। मैंने बोला सर्वर नंबर 1, सर्वर नंबर 1 एक ही इंस्टेंस की जरूरत है, एक की जगह 5 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इंस्टेंस टाइप चूज करेंगे, उसकी टाइप के इंस्टेंस की आपको यहाँ पे जरूरत है, राइट। सो लिनक्स लेना चाहते हैं, विंडोज लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये इंस्टेंस लेना चाहता हूँ 2 CPUs and 4 GB RAM। I want to take this instance with 2 CPUs and 4 GB RAM। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मुझे डेडिकेटेड मॉनिटरिंग लेनी है, डेडिकेटेड इंस्टेंस लेना है तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे चूज कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको ऑन डिमांड लेना चाहते हैं, ऑन डिमांड बाय डिफॉल्ट तो ऑन डिमांड ही चूज करेगा ये। बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू चूज ऑन डिमांड ओनली, राइट। नाउ जस्ट गिव अ मिनट। Now
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट तो आपको ऑन डिमांड दिखा रहा है, बट अगर आप 1 साल का अपफ्रंट रिजर्व लेना चाहते हैं या पार्शियल अपफ्रंट लेना चाहते हैं या ऑल अपफ्रंट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। 3 इयर्स का ऑल अपफ्रंट लेना चाहते हैं रिजर्व तो ये भी ले सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखते हैं कि अगर ऑन डिमांड में 3 साल का लेता हूँ तो $1344 के अराउंड पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं 3 साल का लेता हूँ ऑल अपफ्रंट तो सिर्फ $504 का पड़ रहा है। तो इसमें से 1/3 कॉस्ट पे आपको ये मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। यहाँ पे ऑन डिमांड में तो ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगा, $37 आपको मिल रहा है पर मंथ के बेसिस पे। यहाँ पे आपको $14 पर मंथ के बेसिस पे आपको मिल रहा है। तो मान लीजिए मैंने इसको क्लॉज एंड सेव कर दिया। तो ये इस तरह से आप EC2 की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो जो वॉल्यूम की कॉस्टिंग है वो एडिशनल होती है, अलग से आपकी होती है। इसी तरह से S3 में आप कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। S3 में आपकी अलग अलग स्टोरेज क्लासेस होती हैं। स्टोरेज क्लासेस के बेसिस पे जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टोरेज, मान लीजिए स्टैंडर्ड स्टोरेज में मैं 1024 यानी 1 TB अगर डेटा लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इंटेलिजेंट टीयरिंग में लेता हूँ 1 TB, राइट। 1024 1024 1024। मान लीजिए मैंने आपको सभी की प्रेसिंग में दिखा देता हूँ। हमने ग्लेशियर लिया है। ग्लेशियर के बाद देखिए ग्लेशियर में रिट्रीवल के अलग से चार्जेस हैं। तो और फिर डीप ग्लेशियर, इन सब के बीच में आप कंपैरिजन कर पाएंगे। टू हैव ए क्लियर कंपैरिजन। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सब चूज कर लिया। ये सब चूज करने के बाद आप यहाँ पे चले गए अपने एस्टिमेटेड मंथली कैलकुलेटर में। तो आप यहाँ पे देखिए जो प्राइसिंग है। सो जो स्टैंडर्ड $2 पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा बेस्ड ऑन द एक्सेस पैटर्न। अगर आप डाल देते हैं वन सॉरी स्टैंडर्ड आईए में तो $12 सिर्फ है। वन जोन आईए में डाल देते हैं तो $10 है। ग्लेशियर में डालते हैं, ग्लेशियर की उन्होंने कॉस्ट अभी बढ़ाई है। ग्लेशियर में $4 पर मंथ है और डीप ग्लेशियर में सिर्फ $1 है, राइट। बट इनमें रिट्रीवल भी लगते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से हर सर्विस का जो आप कॉस्ट है, तो इसी तरह से जो जॉब्स होती हैं व्हिच आर रिलेटेड टू योर आप बोलते हैं कि कंपनीज में उसको हम बोलते हैं कि प्री सेल्स। तो प्री सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली BOQ बनाते हैं, राइट। BOQ होता है जो प्राइसिंग ऑफ क्वांटिटी जो आप बनाते हैं उसको। तो उनका जो काम होता है वो प्राइसिंग कैलकुलेट करना होता है। तो प्राइसिंग बहुत सारे पैरामीटर्स पे कैलकुलेट होती है। जैसे आप VPC की जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो VPC बनाने की कोई कॉस्ट नहीं है। VPC पे इन एंड आउट जितना डेटा जा रहा है उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे पैसा जो है वो देना होता है, राइट। यू हैव टू पे बेस्ड ऑन द डेटा व्हिच इज गोइंग इन एंड कमिंग आउट, राइट। नाउ so that was about finding out the costing। तो जो कॉस्टिंग है इस कॉस्टिंग को शेयर भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV में और आप किसी के साथ इसको ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। मॉडिफाई तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। तो देखिए फ्री टियर अकाउंट का डिस्काउंट भी लगा रहा है, तो ये सब तो ऑल दोस्त में मैटर नहीं करता है। बट आप जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब की जो कॉस्टिंग है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और जितनी भी सर्विसेज की डॉक्यूमेंटेशन है उन पे भी कॉस्टिंग दी हुई है, लेकिन कैलकुलेट हम यहाँ से करते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी आई, राइट। तो जैसे अमेजॉन अदर सर्विसेज हो गई जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, उनको अमेजॉन अदर सर्विसेज में डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अथीना हो गया, API गेटवे हो गया, कॉग्निटो हो गया, EKS हो गया। तो ये अदर सर्विस हैं जिनकी प्राइस FSX हो गया, FSX। और जस्ट जस्ट मेरे एक स्टूडेंट को कल
उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ही इज वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उसको FSX लगाना था, लस्टर नहीं लगाना था बट FSX लगाना था। तो उसको मैंने बोला कि आप यहाँ से इसकी प्राइसिंग ले लें, वो प्राइसिंग कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कितनी प्राइसिंग है। तो मैंने आपको बताया भी था सपोर्ट जो प्लान है, सपोर्ट प्लान के अंदर जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एन एस्टिमेट एंड देन यू कैन शेयर इट, राइट। सो ये बात हुई इसकी। तो आइए जो सर्विसेज हमारी रह गई थी उसकी भी बात कर लेते हैं, राइट। So India has entered stage 3. That means it's everywhere, nowhere to contain or isolate. So uh, so हम बात कर रहे हैं अभी क्लाउड वॉच की। So क्लाउड वॉच is a service which will be used for monitoring all the services in the Amazon account. So सर हाँ जी, हाँ, इसमें कुछ ऐसा टूल्स या लॉग्स है कि जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, कुछ भी सर्विसेज ब्रेकडाउन है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लॉग्स टाइप ऑफ जनरेटेड होती हैं, तो कौन सी सर्विसेज है वो? क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल से आप देख सकते हैं, आप स्पेसिफिकली किसी सर्विस के जो लॉग्स हैं उनको जनरेट करा सकते हैं, राइट। और बाकी तो इसी के लिए तो लॉग है ही, लॉग का सेक्शन है ही। तो जनरली हमारा प्रोसेस क्या होता है किसी भी ब्रेकडाउन में ट्रबल शूट करने का इन क्लाउड? जब भी आपका कोई भी सर्विस डाउन होगी तो आप उसकी मॉनिटरिंग पहले से लगा के रखते हैं। तो जब आप मॉनिटरिंग लगाते हैं तो आपको मॉनिटरिंग मालूम चल जाता है, आपको बस मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई है, राइट। सो जो क्लाउड वॉच है, क्लाउड वॉच इट इज ए मॉनिटरिंग सर्विस इन AWS, इट इज ए मॉनिटरिंग सर्विस इन AWS। तो ये आपके जो AWS क्लाउड में है, ये आपके मॉनिटरिंग सर्विस है। तो ये क्या मॉनिटर कर सकती है? इट कैन मॉनिटर योर सर्वर्स, दैट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर। इट कैन मॉनिटर योर एप्लीकेशंस। इट कैन आल्सो मॉनिटर, it can also take actions based on the changes in the AWS resources. So ये आपके जो changes होते हैं AWS resources में उसके हिसाब से actions भी ले सकती है, right? So the first thing is that we will go and monitor it. Now, so मान लीजिए I am having a server. Let's launch a server because we need to see that how to monitor it. Launching a server. Click on launch instance. So I'm taking Amazon Linux. I just need to launch it. So we will choose it 1 GB, 1 GB RAM, and we are just launching it.
So you know that by default आपके पास अगर कोई भी इंस्टेंस है या कोई भी आपने इंस्टेंस बनाया है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर बेसिक मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट ही अनेबल्ड रहती है। बेसिक मॉनिटरिंग इज अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बेसिक मॉनिटरिंग है, यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, डिस्क रीड, डिस्क राइट, ऑल द बेसिक पैरामीटर्स, यानी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, लाइक मान लीजिए आप हेल्थ चेक के लिए जाते हैं, तो अगर आप हेल्थ चेक के लिए जाते हैं तो उस केस में भी आपका जो हेल्थ चेक होता है वो बेसिक पैरामीटर्स पे ही होता है, बीपी, शुगर, एलएफटी, केएफटी। तो इसी तरह से जो सर्वर्स हैं इनका भी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर let's see, इनकी भी जो मॉनिटरिंग है that is happening by default. सर स्क्रीन बहुत स्लो लोड हो रही है। So इंटरनेट सिग्नल्स तो फुल हैं, बट आई डोंट नो, कभी कभी जा भी रहे हैं। और नीचे चला गया। तो यू कैन सी है क्लियरली कि ये सब स्टैटिक्स हैं। तो इन स्टैटिक्स पे जो मॉनिटरिंग हो रही है, बाय डिफॉल्ट तो मॉनिटरिंग हो ही रही है, बट दिस मॉनिटरिंग इज बीइंग डन एवरी 5 मिनट्स। हर 5 मिनट में मॉनिटरिंग हो रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, पहली चीज, अगर आप चाहते हैं जो मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो, एंड द सेकंड थिंग इज यू वांट दैट monitoring needs to be recorded, or you will be able to take action on this monitoring. So in that case you have to do this monitoring in CloudWatch. तो मान लीजिए मैंने इंस्टेंस आईडी ले ली, आई एम गोइंग टू CloudWatch नाउ। So services, so we are going to CloudWatch. यहाँ पे जो पहली चीज है, आप एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं। You can go and create a monitoring dashboard where you will keep on monitoring the resources. तो जो आप 3 डैशबोर्ड्स हैं, 3 डैशबोर्ड्स आर फ्री। You can create 3 डैशबोर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। So let's suppose मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया। Let's suppose मैं डैशबोर्ड, I'll create a dashboard. Let's suppose click on create dashboard. So in this dashboard you will be adding widgets. तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको लाइंस में देखने हैं, आपके डिफरेंट जो लाइंस में आप देखना चाहते हैं, इनको स्टैक्ड एरिया में देखना चाहते हैं, नंबर में देखना चाहते हैं, बार में देखना चाहते हैं, पाई चार्ट कैसे देखना चाहते हैं। So I want to see the numbers. Numbers are easier to understand. So click on numbers, click on next,
और यहाँ पे आपने चूज किया EC2, go and choose EC2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि you can go with per instance matrix, you can go with per instance matrix। सो यहाँ पे हम अपनी इंस्टेंस आईडी जो हमने वहां से कॉपी की थी वो डाल देंगे। तो हो सकता है इंस्टेंस अभी अवेलेबल ना हो, बट इट इज अवेलेबल नाउ, यू कैन सी। तो ये इस इंस्टेंस से रिलेटेड सारी मैट्रिक्स, अगर सभी मैट्रिक्स को आप मॉनिटर करना चाहते हैं मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे तो आप सभी को मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ को मॉनिटर करना चाहते हैं तो कुछ को भी मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन ऑल, क्लिक ऑन क्रिएट विजेट। यहाँ पे देखिए ऑरेगन लिखा हुआ है। सो नाउ सो यू कैन सी ये सारे के सारे जो आपके ये सारे के सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स हैं जो कि आप डैशबोर्ड पे आप इनको मॉनिटर कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव डैशबोर्ड, यू कैन सेव योर डैशबोर्ड। अगर आप और विजेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वन बाय वन विजेट्स ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड अलार्म्स, अलार्म्स भी आप मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। So initially when we have started working, like I have started working in the year 2003, तो उस टाइम पे जो डैशबोर्ड्स होते थे वो हमें मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मिलते थे। देवर वेरी बिग डैशबोर्ड जहाँ पे हम मॉनिटर करते थे कि हाँ सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया है नहीं, रैम का यूटिलाइजेशन के क्या हाल है। और जैसे ही जो भी हमारे पास एक थ्रेशोल्ड था उससे होते ही हम पहले सबसे पहले टिकट जनरेट करते थे। सो इसी तरह से ये डैशबोर्ड भी उसी तरह का कुछ काम करता है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटेड एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी तो मैं यहाँ पे अलार्म्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। आई कैन गो एंड क्रिएट अलार्म्स। Let's suppose I'll go and click on create alarm, click on select metric। मैं यहाँ पे एक मीट्रिक सेलेक्ट करना चाहता हूँ। कौन सी मीट्रिक? लेट्स सपोज, तो ये आपको वो सारी सर्विसेज दिखा रहा है जो आपने अभी रिसेंटली यूज की हैं। यहाँ पे आप ये सारी सर्विसेज देख सकते हैं जो आपने रिसेंटली यहाँ पे यूज की हैं। EC2 में आपने यहाँ पे देखना और इंस्टेंस मैट्रिक्स, यहाँ पे आपने अपनी इंस्टेंस आईडी डाली और आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आपके इससे रिलेटेड जो भी मैट्रिक्स थी आ गई। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अलार्म क्रिएट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द सीपीयू यूटिलाइजेशन। आप चाहते हैं कि जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ऑल्दो आप एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आप बहुत ही एडवांस्ड एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल एक्शंस भी डिफाइन किए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट मीट्रिक। मैं कह रहा हूँ इस इंस्टेंस का अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो 5 मिनट के पीरियड में इसको मॉनिटर कर रहा है। लेट्स सपोज आई वांट टू मॉनिटर इट एवरी 1 मिनट। मैंने यहाँ पे 1 मिनट चूज किया। थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बैंड यूज कर सकते हैं इसके और इसके बीच में। स्टैटिक अगर आप जाएंगे तो स्टैटिक में आप चूज कर सकते हैं सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें था इसके और इसके बीच में भी आप कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे बोला अगर मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है इसका वो इंक्रीज हो जाता है मोर देन 70%, सो उस केस में आप एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। तो हमने पहली चीज ये सेटअप किया है कि मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो उसको वो हर 1 मिनट में देखे। और उसमें भी डेटा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 में से एक बार अगर वो फ्रीक्वेंसी 70 से ऊपर उसको मिलता है, एक बार मिलता है तो छोड़ दे, लेकिन 2 में से अगर एक बार ऐसा होता है तो उसको वहां पे ये कर दे, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम इसको 1 आउट ऑफ 1 ही रखेंगे बाय डिफॉल्ट। क्लिक ऑन
So it is saying that treat missing data as bad. Treat missing data as bad. That means breaching threshold. Click on next. And so you can see the state will become alarm. तो इस केस में आप existing SNS टॉपिक ले सकते हैं, आप एक नया SNS टॉपिक भी बना सकते हैं. तो मान लीजिए हम नया SNS टॉपिक बना रहे हैं यहाँ पे, because we do not know कि existing टॉपिक कौन सा था. मान लीजिए मैंने यहाँ पे टॉपिक बनाया फर्स्ट में. ईमेल आईडीज दीजिए अपने अपने, 2-3 ईमेल आईडीज बता दीजिए. राम बता दीजिए. ज्योति राय 2610 J YOTI. RAI 2610 @gmail.com. 2610 610 It is correct, right? gmail.com. So हमने ये ईमेल आईडी डाल दी. एक और ईमेल आईडी दे दीजिए अपने से कोई भी. So आप कॉमा के साथ बहुत सारी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं. Anyone? हाँ जी सर, मेरी ले लीजिए. हाँ जी, आहूजा रितिका. It's आहूजा okay. रितिका. HUJA रितिका RITIKA 1992 1992 1992 @gmail.com. So आप दोनों के पास जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट नोटिफिकेशन, you are going to get a message. You need to click on approve. As soon as you will click on approve, you will be added as a subscriber to this topic. You will be added as a subscriber to this topic. तो अगर आप यहाँ पे एक्शंस डिफाइन करना चाहें तो आप एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस हैं. अगर ऐसा होता है तो ये इंस्टेंस को स्टॉप कर दे या टर्मिनेट कर दे या रीस्टार्ट कर दे. ये कुछ अलग अलग एक नया आने वाला है विच इज रिकवर दिस इंस्टेंस. तो रिबूट दिस इंस्टेंस, टर्मिनेट दिस इंस्टेंस. और यहाँ पे आप एक कूप सेंटर में आप बहुत सारे ऑपरेशंस भी आप इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. तो सारी चीजें जो हैं वो की जा सकती हैं. So I hope you have confirmed it. As soon as you confirm it, alarm will get created. So I'm saying that it is alarm number 1. Click on next. And you can see alarm got created. Click on create alarm. अलार्म है वो बन गया. Now let's take the remote of the instance and we will increase the load. As soon as you will increase the load, आप सबके पास जो है नोटिफिकेशन आएगा इस केस में. So this was about alarm. इसी तरह से आप एक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं. Also define action. तो आज अलार्म तक ही करते हैं. एक्शन हम कल डिफाइन कर लेंगे और कल एक प्रोजेक्ट भी कर लेंगे. ओपन एक्शंस में हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं. एक्शन में यस लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. यस we will actually define action and see. We will go to putty. अब जैसे ही हम यहाँ पे लोड बढ़ाएंगे let's suppose I'm running a command for increasing the load which is yes greater than symbol dav null ampersand. जैसे ही मैंने ये चलाया यहाँ पे I'll run the command for top. जैसे आप यहाँ पे टॉप कमांड चलाएंगे इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ गया. और जैसे ही इसको फाइंड आउट करेगा क्लाउड वॉच दैट सीपीयू यूटिलाइजेशन इज इंक्रीजिंग, सो यू कैन सी इट इज ओके. अभी तो ये ओके है क्योंकि 1 मिनट इसको हो गया
तो बाय डिफॉल्ट जब जैसे ही आप अलार्म बनाएंगे, देखिए इन अलार्म आ गया, स्टेट बिकेम इन अलार्म, तो उसमें as soon as it will find out that state is an alarm, ट्रिगर हो गया। figure out right. So initially you will see that it is an insufficient data. Insufficient data के बाद ये ओके स्टेट में चला जाएगा, जैसे वो फाइंड आउट करेगा कि 70 से नीचे है, और जैसे ही वो अलार्म हो जाएगा so it will show you the alarm, right? तो जो क्लाउड वॉच है इट इज अ फ्री सर्विस, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बट अगर आप ये अलार्म्स बनाते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं तो अलार्म का जो मैसेज है वो भेजने के लिए एसएमएस चार्ज करता है, और अलार्म में मॉनिटरिंग जब आप करते हैं तो उसका भी एक चार्ज है। तो डैशबोर्ड्स हैं, आई टोल्ड यू 3 डैशबोर्ड्स आर फ्री, 3 से ज़्यादा आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसकी भी आपको कॉस्ट जो है वो देनी होगी। सो टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग इवेंट्स, क्योंकि इवेंट्स अब यहाँ से हट गया है और उसके लिए एक नई सर्विस इन्होंने लॉन्च कर दी है विच इज नोन एज इवेंट ब्रिज। We'll understand event bridge and we will also talk about a project, right? ठीक है जी, कल मिलते हैं सेम टाइम, राइट? सर टेस्ट तो रह गया। हाँ जी, टेस्ट फिर कल ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक लेंगे, पहले फिनिश कर लेते हैं आराम से, है ना? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।